हेलो वीवर, वी आर टीम टाइटन और हमने अपने एंड टर्म असाइनमेंट में बनाया है स्टडी नोशन, एक ई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो कि एक क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स को। लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड इसका यूआई कैसे है और ये इसकी फंक्शनैलिटी कैसे काम कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यूआई को सिंपल रखने की कोशिश करी है। ये नॉन फंक्शनल यूआई है, सिंपली वीडियोज और एनिमेशंस का यूज करके हमने इसको इंटरेक्टिव दिखाने की कोशिश की है। स्टडी नोशन के थ्रू आप एज ए दो एक्शन आप रजिस्टर कर सकते हैं, एक एज ए इंस्ट्रक्टर और दूसरा एज ए स्टूडेंट। लेट्स सी, अब क्योंकि मैंने अभी एज ए इंस्ट्रक्टर रजिस्टर कर रखा है, तो मेरे पास अथॉरिटी है अपने डिटेल्स को चेंज करने के साथ ही साथ अपने कोर्सेज को अपडेट और ऐड करने की। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने अगर कोर्सेज दे रखा है, तो मेरे पास ये फंक्शनैलिटी है कि मैं अपने कोर्सेज को एडिट कर सकता हूँ। जो जो चीज़ मुझे एडिट करने की है, मैं वो चीज़ पे अपने एडिट कर सकता हूँ। और साथ ही साथ मैं एक अपना कोर्स ऐड भी कर सकता हूँ। Fair enough. Let's try making one course about computing। और कोर्स बनाते हैं, learn cloud in 1 day। प्राइस रख देते हैं 2000। कैटेगरी चूज कर देते हैं हम डेवलपमेंट, एंड लेट्स पुट टैग एज ए क्लाउड। थंबनेल हमें पुट करना होगा, so put this image and benefits simple and easy to learn। Requirement, let's put laptop। Let's click to next। Create a create section, let's add lecture to it। For our वीडियो के लिए इंट्रोडक्शन। तो put this and next make it public and update। तो आप देख सकते हैं हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स होस्ट हो चुका है। अगर आप हमारे डेवलपमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि हमारा 3 कोर्सेज और एक क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्सेज हमारा ऐड हो चुका है। ये हम लोग रिफ्रेश करने के लिए हमारा रह रहा है। नाउ लेट्स सी, अगर मैं अपने आप को एज ए लर्नर, एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करूँगा, अगर मैं अपने आप को साइन अप करूँगा, तो हमारी एक टेम्पररी let's create one temporary mail for that। Let's create on my name only temporary email का यूज करेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपना एक ईमेल यहाँ पे जो डाल रहे हैं उसकी हमारी नेसेसिटी, इसीलिए वैलिड ईमेल डालना होगा, क्योंकि हमें एक ओटीपी जाएगा इस मेल के लिए फॉर वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन पर्पस। और टाइम लग रहा है नंबर।
ओके, सो ओटीपी चला गया फाइनली। लेट्स सी। ओके, तो हमारे भी आ गया है ओटीपी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ओटीपी आ गया है 848647। 848647 become test। now let's sign up। तो हम लोग एज ए स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्टर हो गए हैं। अगर हम लोग देखें तो हमारा कार्ट अभी एम्प्टी है, एनरोल कोर्सेज एम्प्टी है। हम लोग एक कोर्सेज को अपने कार्ट में ऐड करके करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में हम लोगों ने फंक्शन करने की कोशिश करी है पेमेंट करने की, पर वो समवॉट एरर के कारण रिजल्ट पे एपीआई में वो फंक्शनलिटी हम लोग अचीव नहीं कर पाए, पर कार्ड में हम लोग ऐड कर पा रहे हैं। यू कैन सी इंट्रोडक्शन दिख सकता है यहाँ पे। एज एजुकेटर आर्यन चुटानी ने डाला गया है, और click on by one you can see that there is error is coming that could not make a payment. Let's click on add to cart, and you can see that our course is added to our cart. You can remove it. You can purchase more courses as you want, and you have authority to edit your details. Let's see। हम लोग अपने एक फोटो अपलोड करके देखते हैं। कोई भी इमेज डाल देते हैं अभी के लिए, एंड यू कैन सी ये अपलोड होगी। आप ना करंट पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सेम जिस तरह से हमें ओटीपी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन के लिए आया था, सेम हमारा जब हम लोग पासवर्ड चेंज करेंगे तब हमारा एक ओटीपी जाएगा हमारे मेल पे, जो कि एक लिंक प्रोवाइड करेगा टेम्पररी हम फॉर गिविंग अस ऑथराइजेशन कि हम अपना जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकें। साथ ही साथ हम अपना अकाउंट भी डिलीट कर सकते हैं। और एज ए हम अभी क्योंकि हमारा पेमेंट गेटवे काम नहीं कर रहा, तो हम लोग किसी कोर्स में एनरोल नहीं कर पाएंगे, पर अगर ये चीज़ काम कर पाता तो हम लोग अपने एनरोल कोर्सेज को रिव्यू भी कर सकते थे। So hope you like our project। So, good evening, sir. My name is Yash, and I'm the team member of StudyNotion. We made a project in this BWN term, which name is StudyNotion. And in this video, I'm going to tell what was my work. And first, I am going to share my screen. Okay, so this is our site, and in this VS Code, I'm going to restart my site. So as you can see, this is our home page, and this is sign up and login section. I made both of that. I majorly my work was authentication in backend. So I'm going to show my work. This is authentication code in controller section. ओके, तो पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने एक कंट्रोलर बनाया साइन अप नाम से, जिसके अंदर मैंने असिंक और अवेट नाम के फंक्शन यूज़ करे हैं। इसके अंदर हम पहले मैंने एक स्कीमा ड्रॉ करा है कि मेरे को एक फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे पहले मैंने वो भी रख रखा है कि ये मेरे को चाहिए चाहिए चेक इफ ऑल डिटेल्स आर देयर और नोट। ये मैंडेटरीज है, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। ओके, एंड यहाँ पे यहाँ पे एक ट्राई एंड कैच में डाल रखा था रिटर्न अगर ये नहीं मिले, जैसे कि पहले मैंने बोला था कि मुझे ये सारे डिटेल्स चाहिए, जैसे फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, तो अगर नहीं मिले तो यहाँ पे लिखा है ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। ओके, एंड पासवर्ड कैसे कंफर्म हो रहा है, ये यहाँ पे एक वो लिखा है इफ कंडीशन में, इफ पासवर्ड नॉट इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड, देन दैट दैट शोस एरर। ओके,
and if the user already exists, so I return some code in if condition. So user already exists, you can show here, please sign in, continue, and in this find the most recent OTP of the mail. तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ पे मैंने अपना पहले नाम भरा, लास्ट नेम, ईमेल भरा, लाइक आई एम एच गुप्ता, create password 1234, confirm password 1234, and click on create account. So here you can see, here यहाँ पे एक OTP मांग रहा है जो कि मेरे imyashgupta13@gmail.com पे आई है। तो मैं आपको एक OTP भी दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है। So here you can see, this is the OTP which I received, copy and here paste, verify email. So sign up failed, क्योंकि मैंने इस ईमेल से पहले भी साइन अप कर रखा था। तो यहाँ पे ये रहा OTP का कोड, और यहाँ पे मैंने हैश पासवर्ड यूज़ कर रखा है, bcrypt हैश पासवर्ड डॉट 10 की, मतलब 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ पासवर्ड की लेंथ मेरी 10 है। क्रिएट द यूज़र, ये एक फंक्शन है कि मेरे को इंस्ट्रक्टर के लिए क्रिएट करना है या फिर एक स्टूडेंट के लिए क्रिएट करना है। राइट द क्रिएट द एडिशनल प्रोफाइल फॉर यूज़र। So all here you can see user registered successfully if the password matches with confirm password. So ये दिखा देगा कि यहाँ पे यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुके हैं। और अगर नहीं, यहाँ पे ट्राई एंड कैश में मैंने डाल रखा है कि अगर यूजर सक्सेसफुली नहीं रजिस्टर हो पाता तो यहाँ पे यूजर कैन नॉट बी रजिस्टर, प्लीज ट्राई अगेन, ये एक एरर शो हो जाएगा। और यहाँ पे एक लॉगिन के लिए मैंने कंट्रोलर बना रखा है कि लॉगिन कैसे काम कर रहा है मेरा। अगर मेरा ईमेल और पासवर्ड दोनों में से कोई भी मिसिंग है तो यहाँ पे फॉल्स, सक्सेस क्या आ जाएगा मेरा, फॉल्स, प्लीज फिल अप ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड। एंड यहाँ पे मेरा यहाँ पे आ जाएगा कि मेरा जो ईमेल का स्ट्रक्चर है, जैसे अगर इफ यूजर नोट फाउंड इज प्रोवाइडेड ईमेल, अगर मेरा यूजर फाउंड नहीं हुआ तो यहाँ पे फिर से एक मैसेज आएगा, यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड विद अस, प्लीज साइन अप टू कंटिन्यू। ओके, और मेरा ये मेजोरिटी पार्ट कैसे काम कर रहा है, विद JWT टोकन्स। आई मेड टोकन्स विद द नेम ऑफ यूजर्स। हेयर यू कैन सी JWT मैंने यहाँ पे यूज करा है, JWT जनरेट टोकन्स एंड कंपेयर पासवर्ड। ओके, एंड सेव टोकन्स इन कुकी सेट, कुकीज यहाँ पे कुकी सेट कर रखी है मैंने कि न्यू डेट, मेरे ये डेट नाउ करके कुछ कर रखा है। और बस यहाँ पे एक सेंड OTP फॉर ईमेल वेरिफिकेशन कि मेरा OTP कैसे जा रहा है वहाँ पे। ओके, एंड इफ यूजर फाउंड विद प्रोवाइडेड ईमेल, तो क्या होगा, यूजर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, कि आप एक ईमेल से दोबारा नहीं कर सकते रजिस्टर, जैसे यहाँ पे आ रहा था जब मैंने करा था। ओके, और ये सारा OTP का कोड है, फॉर चेंजिंग पासवर्ड भी रख रखा है मैंने, एंड दैट्स इट। और जो दूसरा मेरा मेजोरिटी काम था वो था OTP जनरेट करना। here you can see how I can how we can generate the OTP। तो पहले तो मैंने ईमेल, पहले इसका थोड़ा स्कीमा ड्रॉ करा है कि ईमेल टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू यस, OTP स्ट्रिंग में आएगा और रिक्वायर्ड आएगा, मतलब रिक्वायर्ड उसकी रख रखी है, क्रिएटेड एट डेट दे रखी है, एक्सपायरी दे रखा है कि मतलब कि 5 मिनट बाद वो एक्सपायर हो जाएगा OTP आपका। और यहाँ पे एक मैंने एसिंक फंक्शन यूज़ कर रखा है सेंड वेरिफिकेशन मेल के लिए, ट्रेंड ट्रेंड कैच का फिर से यूज़ करा कि अगर मेल रिस्पॉन्स वो आता है, मतलब सेम आता है, तो वेरिफिकेशन ईमेल ईमेल सेंड सक्सेसफुली
और अगर एरर आता है तो एरर occurred while sending emails and OTP schema dot pre-save, that's it। ये OTP का पार्ट हो गया। और एक मिडल वेयर में मैंने ऑथेंटिकेशन एक और दी है यहाँ पे, वही कि मैं फिर से एक टोकन क्रिएट कर रहा हूँ हर कुकी के लिए। और इफ टोकन इज मिसिंग, रिटर्न द रिस्पॉन्स ये टोकन मिसिंग। एंड इन ट्राई कैच ब्लॉक, लाइक कि इसके अंदर ट्राई में तो कि टोकन वैलिड है, इसके अंदर कैच में क्या करेगा, एक वो दे देगा, एरर दे देगा, टोकन इज इनवैलिड। ओके। एंड कैच एरर with something went wrong while validation the token। So that's it, hopefully you would like our work, and that's it, thank you so much। Hello everyone, my name is Agam. I am from group 29. Basically, our group EducateX has created an edtech platform in which students can enroll into courses and learn the courses, and from where the instructor can deliver the course. So this is our project, code of the project. So I am starting the project. Opening the terminal, moving to the server folder, starting the server using npm start. You can see the DB is connected successfully. Cloudinary is connected and app is listening at 4000. Moving to the front end part, opening the new terminal, moving to front end folder, starting front end using npm start, and front end is starting. So basically, this is the home page of our project. In this project, I have created the profile section of the student and the instructor. Both student and instructor have their own dashboard. So basically, I have logged to the student. Now I am logging out. Now I am logging it again. So this is the login section. I have created this login section for the student. So this is the email. This is the password. I have registered already for this student. So I am showing to how to log in this in for it. I am signing in. So this is the dashboard for the student, in which he can see his enrolled courses, his profile. He can edit his profile. He can upload picture of his. He can write about himself or herself. He can edit his personal details. So in this card section, the enrolled courses which he want to buy will be there. So now I am logging out from it. Now I will show how to sign up to the website as an instructor. Giving the first name of the instructor, that be it be Agam. Last name be Roda. Email address be this. Let the password of the constructor be 000. Confirm password. Creating the account for the constructor. So the OTP is sent successfully. The OTP functionality is done by Node Mailer, which is also done by me. Moving to my email. So we have received the email. The OTP is 159441. 159441. We are verifying the OTP.
and the OTP. We have signed up successfully, and our details are in the database. We can check it here. Moving to the server part, see our details and OTP are there. Now I am giving the email address, the password, signing in. We can see this is the dashboard for the instructor. His, the courses he have done now. We can add the course, his profile, where he can edit his details for this, like edit. He can write the date of birth, mail about his skills. Now moving to the code of all the things. So, moving to the models of the profile, how the profile is made. So basically we have required mongoose. Through mongoose.schema, we have written the details of the profile like gender, date of birth, about, contact number, and we have exported that file. Moving to the controller of this profile.js. Controller mainly contains, we have requiring all the modules we need, like the profile, the progress of the student, the course he has enrolled, the user, the the image to from which he can upload his image. Cloudinary is imported. We have imported the Mongoose. We have created a function update profile in which is an updated first name, last name, date of birth, and many more. And this is imported to request.od. We have requested his email ID. We have requested his user details, and then these user details are saved to await.user.save. We are updating this. After saving, we are updating this details to the profile. Now the profile is saved, and then the request.json, we have said that the profile is updated successfully. If there is any error in the details of the user, we give the error using request.status 500. This is the delete account functionality through which we get the user ID by find by ID. If there doesn't exist a user, we give an error user not find. Then if there exists a user, we find by ID and delete the user details of that person. Then the course is enrolled. So basically this is this core update display picture. So basically this is the course for the profile.js. Moving to the OTP functionality of the user. The OTP functionality mainly includes requiring Mongoose mail sender, email verification template, OTP schema. What is the OTP schema? OTP schema mainly includes email OTP created at. So we have created a function send verification email which takes email and OTP. The send verification email contains a mail response which verifies the OTP and tell the user that the mail is sent successfully. And then we are exporting the OTP. Then moving to the reset password.js. Firstly, I show how we can reset the password. So we are logging out from it, logging in again. Let the user be this. Let we forget the password. We are giving the email address. We have received the password reset email. This is the link for password resetting. Let the new password be 1234 1234 and the password is reset.
Moving to the code of password reset, it requires modder.user, mail sender, vcrypt, crypto, export.reset token, which takes the email the user of which the password is, we have to delete. If the user doesn't exist, we give the password is the email is not registered yet. Then we create a token which helps to identify the user. We update the details of the user. Then we create a link that update password. Then this link is yet not connected to backend. We have used the mail sender, which tells the email the password link, the email verification, which with the request.json we tell the email sent successfully. Else we give the error sending in the read send message. This is the controller for it, which take the password confirm password token. If the confirm password not equal to password, we give the password and confirm password doesn't match. Yet we also give the token is invalid. If it take much time than the expiry of token, then we give the error token is expired and please regenerate. At last, if everything is given correctly, we give the password is reset successfully and we give the some error in updating the password. That all from my side. Thank you. Hello everyone, I am Aryan and I'm excited to share with you my contribution to the StudyNotion project. Talking about StudyNotion, it is a dynamic full stack application that helps students and educators manage their studies. Today we'll focus on the crucial aspect of our backend part, the email communication system. So as you can see on the screen is the component mail sender.js. It serves as a crucial backend component in StudyNotion which fulfills several essential functions. First being the email transmission. Its primary role is to facilitate the sending of emails to users within the StudyNotion ecosystem. Another aspect is NodeMailer integration. The file incorporates the NodeMailer library, which streamlines the process of setting up and using an email transport service. Another crucial thing about this component is it uses secure configuration, which ensures secure transmission by configuring essential parameters such as the host, port, and authentication details, which are unique, which are all managed through environment variables. Its versatility is also crucial component, which states that it is designed to handle various types of emails from user notification to password reset emails, contributing to the overall communication strategy of StudyNotion. So now I will explain the NodeMailer.js line to line. So let's go through the code line by line. The const NodeMailer the first line imports the NodeMailer library, which is the module of Node.js that allows sending emails. The .env .config line imports and configures the .env module. .env is used for loading environment variables from a .env file into the process.env. The next line is an asynchronous function named mail sender that takes three parameters: email, title, and body. Then we have the try catch block, the starting of try catch block, which catches an error in the try block and displays it in the catch block. Uh, in this, we create a node mailer transporter that using the configuration provided in the object. The transporter is responsible for sending emails. It is configured with the host, port, and authentication details such as username and password from the environment variables. There's another try block, and in this we have the info that sends an email using the transporter. The details of the email, such as the sender, recipient, the subject, and the HTML content, are provided in the object.
We use the await keyword because the send mail is an asynchronous function. Then the info is displayed using the console.log. And we then return the info, which can be useful if we want to handle the result of sending the email into the calling code. The last line ensures that the mail sender function can be exported so that it can be used in other files by importing it. The next part is the email templates, which I will explain now. Continuing with my part, my part was to design generalized email templates. One of them is contact form res.js that you can see in your screen. This plays a vital role in StudyNotion's backend, specifically focusing on handling responses to user inquiries submitted through the contact form. The first aspect is email confirmation. Its primary purpose is to generate a confirmation email for users who submit inquiries via the contact form. Personalized content of this component tailors the confirmation message by incorporating user-specific details such as their name, email, phone number, and their message they submitted. The professional appearance of the page is it creates a visually appealing and professional structured email template, reinforcing StudyNotion's commitment to a positive user experience. It seamlessly integrates with the contact form functionality, enriching the user experience in the following ways. The first being user acknowledgement, details recap, and support information. As you could see on the screen, well-designed HTML page which uses the environment variables first name, last name, email, phone number, and message that are imported from the contact form. We have three other more templates. First is a course enrollment email, which uses the same functionalities, but the environment variables are name and course name, which is sent to the user whenever he or she registers to a course. Other is the email verification template. This template is sent to a user whenever there is a need to verify the email. The OTP is generated, and this OTP acts as an environment variable in this page, and this page sends the OTP as you could see on the screen. Second. So this is the OTP generated template that appears whenever the user wants to verify their email. So here the user santosh.202.sho is the Gmail, and 166136 is the OTP. Another thing we have is the password update, which uses name and email as its environment variable. So that was all my part. Thank you very much. सो हेलो अगेन। तो मेरा कंट्रीब्यूशन स्टडी नोशन में कोर्सेज को मैनेज करना और कैटेगरीज को अपडेट करना था। सो लेट्स सी ये हमने किस तरह से अचीव किया है। हमारे रिप्रेजेंटेटेड कोर्सेज हमें अपने कैटलॉग पेज में दिखेंगे, और जो कि हमारा शो करता है कि हमारे पास क्या-क्या कैटेगरीज़ अवेलेबल है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं डेवलपमेंट और यूआई यूएक्स कैटेगरी अवेलेबल है हमारे पास फ़िलहाल। इन टोटल हमारे पास अगर आप देखेंगे हमारे डेटाबेस में तो 3 कैटेगरीज़ अवेलेबल हैं,
डेवलपमेंट, डेवऑप्स और यूआई यूएक्स, जो कि हमने मैनुअली अपडेट किया था। एंड लेट्स स्टार्ट बाय लुकिंग एट देयर मॉड्यूल। अगर मैं कैटेगरीज का मॉड्यूल दिखाऊँ तो सिंपल एंड मिनिमल है, जो कि हमारा नेम और डिस्क्रिप्शन विथ कोर्सेज का एरे, जो कि हमारे उस कैटेगरीज में लाई करेंगे। हम लोग एक एक करके उसे इस एरे में अपडेट करते जाएंगे। अगर हम लोग कोर्सेज का मॉड्यूल देखें तो इसमें हमने यूजर से मांग रहे हैं कोर्स नेम, कोर्स डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्टर, व्हाट यू विल लर्न, courses content, rating and review, price, thumbnail, tag, category, student enrolled, instruction, status, and created at. Now let's see हमारा कैटेगरी का कंट्रोलर्स। कैटेगरीज और कोर्सेज के कंट्रोलर काफ़ी सिमिलर है। हम लोग सिंपली एक कंट्रोलर बनाया है अपडेट के लिए, एक इनिशियलाइज़ करने के लिए, एक डिलीट के लिए। सेम जो कंट्रोलर्स है हमने कोर्सेज़ के लिए भी बनाया है। तो जैसे अगर हम लोग ये क्रिएट कैटेगरी कंट्रोलर्स को देखें तो हमने सिंपली इसका अल्गो ये बनता है कि हम लोग पहले कोर्स में रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, डेटा बॉडी रिक्वेस्ट मांग रहे हैं। फिर जो हमने डेटा मिला हम उसे वैलिडेट कर रहे हैं। अगर वैलिडेट नहीं हो रहा है तो हम एरर पास कर रहे हैं। अगर वैलिडेट हो जा रहा है तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसीजर पे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग क्रिएट कैटेगरी की बात करें तो हमने नेम और डिस्क्रिप्शन मांगा, और अगर हमारा वो वैलिडेट नहीं कर पा रहा है तो हम लोग ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड का एरर पास कर दे रहे हैं। अगर हमारा वैलिडेट कर जा रहा है तो हम उसे अपडेट कर दे रहे हैं डॉक्यूमेंट में। नेक्स्टली शो ऑल कैटेगरी जो कंट्रोलर है उसमें हम लोग फाइंड फंक्शन का यूज़ करके सारी कैटेगरीज को शो कर रहे हैं। जो हमारा शो कैटेगरीज और कैटेगरी पेज डिटेल्स का कंट्रोलर्स है और बाकी सारे भी जो कंट्रोलर्स आगे आने वाले हैं, ये चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे हमारे पेजेस जो कि आप देख रहे हैं कैटलॉग वाले पेजेस में। इसमें हम लोग इसे यूज़ किस तरह कर रहे हैं कि हम लोग जो फ़िल्टर लगाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी फ़िलहाल डेवलपमेंट लगा रखा है, तो इस डेवलपमेंट में आप देख पा रहे हैं कि डेवलपमेंट के जो भी कोर्सेज़ है वो अपडेट हो जा रहे हैं। साथ ही साथ फ्रीक्वेंटली बोर्ड कोर्सेज़ और टॉप कोर्सेज़ का आ जाएगा फ़िल्टर लगाने से। ओके, और लेट्स सी कोर्सेज़ का ये कंटिन्यू करते हैं कोर्सेज़ के साथ। जो कंट्रोलर है कॉन्टैक्ट कोर्सेज़ का क्रिएट करने का, सिमिलर टू कैटेगरी क्रिएट करने का है। हमने इसमें यूज़र से उनके कोर्स नेम, कोर्स डिस्क्रिप्शन, प्राइस और भी काफ़ी सारी डिटेल्स मांगी। सेम हमने पहले डेटा को वैलिडेट करा। अगर वैलिडेट कर रहा है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने उससे अगर वो वैलिडेट कर जा रहा है तो हम अपने डॉक्यूमेंट में अपडेट कर दे रहे हैं। यू कैन सी दिस, फेयर इनफ। एडिट कोर्सेज, अपडेट एंड एडिट कोर्सेज में हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो हमें रिक्वेस्ट आई है बॉडी से, हम लोग उस कोर्स को पहले वैलिडेट करेंगे कि वो कोर्स हमारे पास अभी हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोर्स नॉट फाउंड का एरर दे देंगे। अगर है तो हमें जो उसने अपडेट करने की जो अपडेशन उसने मांगी है हम लोग वो अपडेट इस डॉक्यूमेंट में पुश कर देंगे। सिंपल गेट ऑल कोर्सेज, सिंपल फाइंड फंक्शन का यूज़ करके हमने सारे अवेलेबल कोर्सेज को दिखा दिया है। गेट फुल डिटेल्स, सेम। एंड डिलीट कोर्सेज। डिलीट कोर्सेज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोर्स आईडी के लिए, फिर हम लोग उस कोर्स आईडी को वैलिडेट कर रहे हैं। अगर हमारा कोर्स आईडी अवेलेबल नहीं है तो हम लोग सिंपली कोर्स नॉट का फाउंड कर रहे हैं, और अगर है तो उसे अनएनरोल कर देंगे। ओके, सो जो फाइल्ड अपलोड, जैसे कि आप देख रहे थे कि अगर मैं कोर्स को बनाऊं, क्योंकि मैंने अभी अपने आप को एज ए इंस्ट्रक्टर ही रजिस्टर कर सका है, तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो कोर्स यहाँ बना रखे हैं वो चीज़ यहाँ पे शो होंगे। मैं अपना खुद का कोर्स क्रिएट कर सकता हूँ। साथ ही साथ जब मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मुझे थंबनेल अपलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो ये चीज़ हमने अचीव की है क्लाउडिनरी क्लाउड का यूज़ करके। सो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं हमारे क्रेडेंशियल्स env फाइल में हमने अपलोड कर रखे हैं। इसी के थ्रू हमने सारी जो वीडियोस जो कि हमारे प्लेटफॉर्म में जाएगी और जो थंबनेल होगा हमारे कोर्सेज का वो यहाँ पे हम लोग अपडेट करते जाएंगे।
Okay, that that was all. Thank you. Hello everyone, myself Ajitesh Madhu and I am from Team Educatex and today I will explain the code of the contact us page and here it is. So first of all we have used imported two modules that are contact us email and mail sender module and here are their paths, and then we have used the contact us controller function which requests the data from the user, that is their email, first name, last name, message, phone number and their country code, and through this it is requested, that is console log request.body. Then we have used the mail sending function that sends the mail to the host, that is mail sender function. This We have provided some parameters, that is email, and then the subject is your data has been sent successfully, then contact us email which again sends these following data of yours. Then we have used this successful response part, which if the email is sent successfully without any errors, it logs the email response, email res, and sends a JSON response to the client with success true and success message is sent. Here it is, success true and message is email sent successfully. Then there is this error handling part which catches the error. In case of any error during the email sending process, it catches error, it logs it along the error message and sends a JSON response to the client, success false, which is written here, and a generic error message is sent, that is something went wrong. So this is the code of contact us page. Hope you understood it. Thank you. So now I'll explain the ratings and review page. In this, we have imported some modules that are rating and review, the codes, and the mongoose, obviously, and these are their paths. And then we have created a new rating and review request, which creates a new basically rating and review for you. And then we have created a function which checks if the user has enrolled in the course or not, and here it creates a new request, and if not, then it sends a false request and a message is shown that student is not enrolled in this course. Then a function which we have created is it checks that if the user has already reviewed the course or not. If not, it creates a request which asks for the user ID and the course ID. And if the user has already reviewed the course, it sends a false request and the message is shown that course already reviewed by the user. And then we have, if none of these are done by the user, then it creates a new review and rating. Here it takes the rating, review, and the course ID and user ID. Then we add the review and rating to the course, which is done by rating and reviews function. And if it is successfully done, it sends a true request and it message is shown rating and review successfully created. And if it catches an error, then success is false and internal server error is message is shown. It sends false to the server automatically. Then we have created here a function that is exports.get average rating to make an to make an average rating of all the users of the course that they have given the rating to. And in here, in this function, it extracts course ID from the request body and it uses MongoDB aggregation pipeline to calculate the average rating of the specified course basically. Then it responds with average rating or zero if no ratings are found. This is done here with the help of mongoose, and course ID is given. And if nothing is found, then null is being given to the server and average rating is given. But if it is more than zero, it gives true and average rating is calculated accordingly. Then if no ratings are found,
return 0 as default rating that I just explained. False message is sent and fail to retrieve the rating of the course, the message is displayed. Now we have created a function which is called get all ratings and reviews. Here, exports dot get all ratings and reviews. Now what it does basically is it fetches all the reviews from ratings and reviews, it displays them, basically sorts them in descending order based on the rating that previously we have done on the basis of average rating. Then it here it populates the user and course details for each review, then responds with a success message and the retrieved data. Here it gives true and data is all reviews. But if it catches any error, in case of any error, it responds with, it gives, firstly it gives false to the server and it responds with a message failed to retrieve the ratings and reviews for the specified course. So in this way we have created the ratings and reviews page. Hope you understood it. Thank you.